जय भीम, नमो बुद्धाय सिस्टर, कैसी हो आप? लाइक डन। थैंक यू बहन। और बताइए दीदी जी कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताओ आप कैसी हो? खाना पीना हो गया आपका? मेरा खाना पीना हो गया बहन, आप बताओ आपका हुआ? घर में सब लोग कैसे हैं? सब ठीक है बहन, आप बताओ आप कैसी हो? जय भीम बहन, जय भीम। मैं भी ठीक हूँ। ओके सिस्टर, ठीक ही रहना चाहिए। आपका खाना पीना हुआ? आपका खाना हुआ बहन? जय भीम, जय भीम, जय भीम सिस्टर, जय भीम, नमो बुद्धाय। थैंक यू सो मच। इस समय लाइव नहीं चलाती हो क्या? कल नहीं चलाई थी, आज सुबह से नहीं चलाई थी बहन, तबीयत ठीक नहीं थी ना, इसलिए लाइव नहीं चलाई। जय भीम सीमा सिस्टर बहन, जय भीम। थैंक यू बहन, थैंक यू सो मच। सुपर सुपर, थैंक यू सिस्टर, थैंक यू सो मच। वेरी नाइस, वेरी नाइस। थैंक यू बहन सीमा सिस्टर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सीमा सिस्टर।
मैंने बिस्कुट किया। थैंक यू सिस्टर, थैंक यू सो मच। जुराब पहनी लो बेटा, निकालना नहीं। नहीं बेटा पहनी लो। ये हीटर के पास बैठने से ऐसा होता है। दर्द हो रहा है जलन सा। ये बड़ी छोटी है, सॉक्स वो छोटी है, इससे बड़ी है। फोन आ गया था तो बात करके सोने जा रही थी तो देखी कि आपका लाइव चालू है तो हमने आपकी लाइव में चले आए। ओके बहन, थैंक यू। थैंक यू सिस्टर, थैंक यू सो मच। जय भीम बहन। इसमें नहीं है मेरे पास। मैं इतने दिनों से ये खोज रहा था और ये मिली नहीं। मेरी वो जो पापा ने पेंसिल लाई थी ना, थैंक यू सिस्टर। और कोई नहीं आया है आज भी। मैंने अभी चालू ही किया है, 10 मिनट हुआ। 10 मिनट पहले तो चालू किया बहन। थैंक यू सो मच। क्यों निकाल रहे हो बेटा? ये निकल नहीं रहा। लाइक कर दिया है सभी यूट्यूब फैमिली को। जय भीम नमो बुद्धाय। जय भीम नमो बुद्धाय भैया, स्वागत है आपका। कैसे हो आप? आपका तो कुछ नाम पता नहीं चल रहा है, नाम बताने का कष्ट करिए आप। मैं ठीक हूँ। ओके भैया, ठीक ही रहना चाहिए। एक बार अपना नाम बताओ भैया। बच्चों को चाहिए जितना डांटो पर बच्चे उतना ही चिल्ला रहे। चिल्ला नहीं रहे बहन, उल्टा काम करती हैं दोनों आपस में, परेशान करती हैं। जय भीम सिस्टर। आपने सब्सक्राइब किया है तो मैं आ गया लाइव में। ओके भैया, थैंक यू।
आपका चैनल है क्या भैया बताओ? एक बार आप ना नाम बता दो। अगर आपका चैनल होगा तो मैं आपको जोड़ लूंगी। परदेशी अम्बेडकर। ओके भैया, थैंक्स, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय भीम, नमो बुद्धाय। आपका चैनल है क्या भैया? थैंक यू सिस्टर, थैंक यू। मैंने भी भेजा। मैं अभी तो आपने ज्वाइन किया है भैया? मैं बता नहीं सकती आपको ज्वाइन किया है कि नहीं किया है, क्योंकि आप न्यू लग रहे हैं मेरे को अभी। अगर नहीं किया होगा तो कर लेंगे भैया, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि मेरा स्वास्थ्य अच्छा नहीं था। मैं किसी के कमेंट पे ध्यान नहीं दिया है 3-4 दिन से। मैं ज्वाइन कर लूंगी आपको, अगर नहीं किया होगा तो। अगर किया होगा तो कोई बात नहीं है। आपने ज्वाइन किया है, अच्छा भैया। जय भीम, नमो बुद्धाय। जय भीम भैया, जय भीम। आपका कमेंट आया है। ओके भैया, थैंक्स बताने के लिए। जय भीम, नमो बुद्धाय। जय भीम भैया, जय भीम। और बताइए, खाना पीना हुआ आपका? जय भीम सीमा सिस्टर। खाना हो गया भैया आपका? भैया आपको ज्वाइन किए, रिटर्न कर देना। जय भीम, नमो बुद्धा। नीला सलाम दीदी। जय भीम, नमो बुद्धा। सिस्टर हो या भाई, ये पहले बताओ कैसी हो आप दीदी? ठीक हूँ मैं, पहले से बहुत बेहतर हूँ। खाना पीना हुआ कि नहीं अभी आपका दीदी? मेरा खाना हो गया, आप बताओ आपका हुआ? भाई, ओके भाई, थैंक यू सो मच। कैसे हो आप? क्रांतिकारी, जय भीम, जय संविधान। नीला सलाम दीदी। आपको भी भाई, जय भीम, नमो बुद्धाय, नीला सलाम। कैसे हो आप? चुप जाओ, वो गंदा भाई है। मार दिया ना, चुप जाओ। अच्छा बाबू, दो भारती मामा आ गए हैं। नहीं, इस पे ठेस नहीं आती। आपका तबीयत कैसा दीदी? आप कैसी हो? पहले से बहुत अच्छी हूँ भाई, आपके सामने तभी आज बैठी हूँ। बहुत अच्छी हूँ पहले से। कल तबीयत रात में ज्यादा खराब हो गई थी, मैं लाइव तभी नहीं आई जब आप संगीता दीदी के लाइव में थे ना, तब मुझे बहुत अजीब सा फील हो रहा था, मैं जगी रही थी। अब ठीक हूँ। और आपका खाना पीना हो गया है दीदी? हाँ भाई, मैंने खाना आज खाया, दवाई खानी थी ना तो खाना खा लिया है। खाना खा के, दवाई खा के तब बैठी हूँ। जय भीम सीमा सिस्टर, जय भीम। बोलो। जय भीम, जय भीम। मुझे बहुत खुशी हुई कि आपका तबीयत ठीक है दीदी। बस भाई, आप सबकी आशीर्वाद है, आप सबकी कृपा है, जो मैं आज आप लोगों के बीच में बैठी हूँ। मुझे नहीं लग रहा था कि मैं इतना जल्दी स्वस्थ हो जाऊंगी। मैं 5 दिन से हॉस्पिटल का चक्कर खाच रही हूँ, लेकिन आज रोज से ज्यादा, रात में तो ज्यादा तबीयत खराब थी। सुबह आज मैं गई थी हॉस्पिटल, फिर वहां से आई हूँ।
तब से मुझे बहुत आराम है, शायद इंजेक्शन लगा उसके वजह से कि काहे, लेकिन आज मुझे इतने टाइम बहुत आराम है। ओके दीदी, बाय बाय, मैं जा रही हूँ सोने। गुड नाइट सीमा सिस्टर, बाय बाय। मैं प्रकृति से कामना करूंगा कि आप हमेशा स्वस्थ और मस्त रहो दीदी। थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी यूट्यूब फैमिली को क्रांतिकारी जय भीम, नमो बुद्धाय, नीला सलाम, जय संविधान। पूजा कहाँ चली गई? पूजा बहुत ज्यादा चालाक हो गई वो। मेरे बच्चे आपकी पिक्चर के साथ क्या क्या खिलवाड़ किए हैं भारती भाई, अभी दिखाऊंगी तो आप हंसोगे। श्रेया शिवांशी करी हैं आपके फोटो के साथ, बताओ दिखाऊं आपको? अंजू कुमारी, जय भीम सिस्टर, जय भीम। पूजा बहन कहाँ हो? जय भीम, जय भीम। और बताओ पूजा बहन कैसी हो? मूछ वाली दिखा जो मैंने बनाई है। वो एक और बनाई थी ना। सिंपल फोटो। भारती मामा नहीं, भारती मामी। अरे सुपर दीदी नहीं है, सुपर आपके भांजे हैं। ये तीनों क्या क्या बनाए हैं वही दिखा रही है, हम थोड़ी दिखा रहे हैं। जिसको ऑटो स्टार्ट बोलते हो वही है, वही दिखा रही है, वही आपके फोटो के साथ क्या क्या करी है। बोल रही थी कि हमारा नाम बिगाड़ते हैं ना, हम इनकी फोटो ही बिगाड़ेंगे। क्या क्या बनाई है वही दिखा रही है, और वो सुबह से हंस रही है दिखा दिखा के हमको। दीदी एक बार और दिखा। अरे दीदी थोड़ी दिखा रही है। वही पता नहीं का दूसरे फोन में लगा लगा के दिखा रही है।
मामा कह रहे हैं एक बार और दिखा दो। कोई बात आपसे ज्यादा खुशी मुझे हुई कि कम से कम मेरा फोटो आपके चेहरे पे खुशी है। थैंक यू भाई, थैंक यू। दिखाई फिर से फोटो मैं दिखाता हूँ। राठौर जय भीम भाई, जय भीम। कैसी हो भांजी? भांजी अभी दिखा रही हूँ। इधर उल्टा दिख अरे उल्टा। हाँ ठीक है। अरे वो मूंछ वाली नहीं दिखाई। हाँ सो स्पेशल। वो काला चश्मा लगा के मूंछ बनाते हैं। क्या काला खाए हो चश्मा, भांजी? है खिचड़ी खिचड़ी खाई है। बात तो सही कह रहे हो भाई। थैंक यू सिस्टर। इतने बदमाश तो आपके भांजी भांजा हैं, बताओ। तो आप कितने बदमाश हो? हे प्रभु, मुझे क्या देखने को मिल रहा है? क्या है? क्या दिखा? भाई मैं कल क्या 100 रुपया में भी? बहुत बदमाश है भाई ये तीनों। मुझे अभी आधा घंटा पहले ही दिखाए हैं सब। मम्मी देखो मैंने क्या बनाया है। मैंने कहा क्या बनाई हूँ। कह रही थी भारती मामा आ जाएंगे तो उनको जरूर दिखाएंगे। जय भीम भाई, जय भीम। थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच। मम्मा मेरा ना चोट ठीक हो गया। और बनाना छोटी। ठीक मैं और सब बेकार बनाना। और बेकार कह रही और बेकार ही बनाऊंगी। मुझ यहाँ बनाऊंगा, अब अराउंड यहाँ बनाऊंगा, आंखें यहाँ बनाऊंगा। मैं सपोर्ट कर रही हूँ आपको।
आपको सपोर्ट की जरूरत नहीं रहेगी सिस्टर, वो खुद ही सपोर्ट अकेले कर लेती है, छोटी है। स्मार्ट मम्मी देखो मैं टाइपिंग कह रही है, स्मार्ट। I'm smart no टाइप मत करो इस तरीके। सुबह में क्या खाई थी भांजी? भाई मैं सुबह हॉस्पिटल गई थी तो बच्चों के लिए खिचड़ी बना के चली गई थी, तो खिचड़ी खाई थी। शाम को सब्जी रोटी बनाई हूँ, तो सब्जी रोटी खाई है, वही बता रही थी। मम्मी कल स्कूल है? नहीं, कल वो फिर परसों। हाँ फिर सही ऑनलाइन वर्क पूरा करूंगा। मैं भांजी के फूफा को उड़ा करेंगे कल तो थर्सडे है। अरे यार फ्राइडे को खुलेगा इसका। होता ना तो ट्यूशन भी जाना पड़ता है। मम्मा कल मैं ट्यूशन का ऑफ करूंगा। मम्मी बॉडी ट्यूशन नहीं जाएगी कल। तब बताओ भाई कैसा लगा आपका नया लुक? अच्छा पगली। बेटर गुड बेटर गुड ब्यूटीफुल बेटर गुड ब्यूटीफुल so nice सोना। विचार मुबे खूबी खूबी नहीं बोलते हैं पागल। सुपर 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 पीयू पिक्चर लिख रहा हूँ मैं PICT सी आएगा CT मेरे रहा जो CT सुपर सुपर पिक्चर सुपर 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 पिक्चर एक दिन आकाश गलती से कर दिया था ना, वो ऑटो क्लिकर लगा रहा था ना, वो हो गया था ब्लॉक। नहीं भाई, भांजी को मना करो ना, ऐसा ना काम करे। मैं तो करूंगा। मैं तो करूंगा। हाँ अच्छा, मेरे को कोई नहीं रोक सकता। मुझे कोई नहीं रोक सकता। हाँ कह रही मैं तो करूंगी, मुझे कोई रोक नहीं सकता। मैं तो मामा की पिक्चर बिगाड़ूंगा बिगाड़ूंगा। मामा का पिक्चर बिगाड़ेगी बिगाड़ेगी। चार साफ है ना, उसमें बनाऊंगा, पूरा रंग दूंगा अच्छे से। जब ने मुझे मिली है तब से मुझे पागल बना। ऑटो क्लिकर नहीं है, छोटी है। कह रही मामा मुझे रोक नहीं पाएंगे, मैं बिगाड़ूंगी बिगाड़ूंगी। छोटी बोल रही है, वो डरती नहीं है किसी से, लड़ती ज्यादा है। ये बैठी है ये बैठी है रोने वाली ये बैठी है ये बैठी। क्या क्या बोली? आज मेरे साथ वीडियो बनाई है दोनों। कमेंट कर देना, कह रही कमेंट कर देना, लाइक भी कर देना, लाइक भी कर देना। अच्छी नहीं लगी तो स्वेटर में बहुत चिपक पिक्चर ऑफ माय मम्मा। मैं जा रहा हूँ रोने वाली को फोटो जो कभी कभी अपने लाइव में लगाते हैं। अच्छा
जल्दी छिपकली, हाँ छिपकली चिल्ला रही थी। कितना सारा चिपका सोनू भाई की लाइव चल रही है क्या भारती भाई? भाग जा रहे हैं ऊपर, दरवाजा बंद कर। पीछे बैटरी कहाँ गई यहाँ से? सोनू भाई की लाइव चल रही है क्या भारती भाई? तो सीने जाऊंगा। Super picture of my mama ji, your face. Wow, what a English. From Narsang. मुझे ज्यादा हंसी आ रही। दीदी कहाँ है सिस्टर? इतनी हंसी कहाँ आ रही है? सोनू भैया से मांगूंगा मैं वही फोटो जो अपने लाइव में लगाते हैं। अच्छा ठीक है फिर रोने वाली? ना मुझे किसी का दिल चाहिए, ना मुझे किसी का जान, और ना ही मुझे किसी का एहसान चाहिए। मुझे कोई समझ सके, मुझे बस ऐसा इंसान चाहिए, ऐसा इंसान चाहिए। क्या बात है भाई, थैंक यू, दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, आपने सही बोला है। थैंक यू भाई, थैंक यू। तुम बहुत निकाली। हाँ छोटी बिगाड़ना जरूर। किसको? मामा को। सोनू मामा को? सोनू मामा को नहीं, फिर भारती मामा को। ठीक है, और भी काट दूंगा। जब हाँ ब्यूटीफुल नहीं होता है लड़के के लिए, लड़कों को ब्यूटीफुल नहीं बोलते। कह रहे सॉरी। ब्यूटीफुल एंड ब्यूटीफुल नहीं। कह रही है जब मैंने फोटो लड़की की बना दी हूँ तो ब्यूटीफुल ना बोलूं तो फिर क्या बोलूं बताओ। उसको पता है, आपसे ज्यादा वो समझ गई, आप नहीं समझ पाए। कह रही है जब मैंने उनको लड़की बना दिया तो ब्यूटीफुल ना बोलूं तो फिर क्या बोलूं बताओ। आप बताओ फिर क्या बोले। मामा को मेल भी लिखना नहीं आता। MAIL होता है। अच्छा भांजी, हाँ। मेरे को तो कमेंट करनी नहीं। कर नहीं अब तक सोनू भाई से, आपसे, जिसको जानती उससे लड़ती है बस। परमिशन की मामा से। क्योंकि अपने मामा से नहीं बोल पाती है, अपने मामा से बहुत डरती है ना हकीकत में। मामा कितना भी प्यार करते हैं लेकिन डरती है, उनको देखते ही चुपचाप गुमसुम सा बैठ जाएगी। अपने मामा से बहुत डरती है। अभी तो डरते हैं। हम भी डरते हैं। हाँ डरते हैं ना। हाँ, मैंने मना थोड़ी ना किया आप नहीं डरते। मैंने ऐसे कब बोला? अरे मुझे पता नहीं है, मुझे बता दिया कि कैसे लिखा था। पागल कर देंगी भाई।
इसी सीट की पता करे। दर्द हो रहा है। क्या ऐसे लिखना चाहिए, ऐसी अच्छी होती है। ये लिखा है नाइस। पिक्चर आ रही है, उधर ही खिसक जाओ थोड़ा सा, आराम से, लड़ाई नहीं। फरवरी लिखो इंग्लिश में भांजी, लिख के तो भेजो मामा। ठीक है फरवरी। पूजा बहन, पूजा 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 बहन कहाँ गए? प्याज, सॉरी पूजा बहन, प्याज लिखा गया। नहीं मामा लिख रहे हैं। जय भीम, नमो बुद्धाय। मनोज भैया स्वागत है आपका लाइव में, कैसे हो आप? बहुत दिनों के बाद आज आए हो, कैसे हो भैया? हाँ आरती दीदी बोलो। सब बढ़िया है, पूरा परिवार ओके भैया, बढ़िया चाहिए। खाना पीना हुआ आपका? अपना बताइए। हम भी ठीक है भैया, आप सबका आशीर्वाद है, हम भी ठीक हैं। आपके बड़े भैया जी ठीक हो गए हैं अब? खाना हो गया? हाँ भैया खाना हो गया, आपका हुआ? क्यों लेट कर दिया भांजी? अरे भाई वो तो कब के भेज दी, जल्दी लिखो। भेज दिया कब के, जब आपने प्याज लिखा था तभी भेज दिया, आप चेक नहीं किए क्या? थैंक यू थैंक यू। वो तभी भेज दिया भाई जब आप बोले हैं, ऊपर जाके चेक करो। अच्छा मैं ध्यान नहीं दिया था, कोई बात नहीं है भाई। आप खाना खाए कि नहीं अभी भारती भाई? मैं खा लिया हूँ दीदी। ओके भाई, आज कैसे जल्दी कंप्लीट हो गया आपका खाना?
आज क्या बनाए थे? बाबू कंबल छोड़ना, मुझे देना। ऊपर हटाओ, अंदर कर लो ना कंबल के, ऐसे उठा रही हो ऊपर तो। हीटर क्यों जलाया जब वहां कोई बैठा नहीं? बंद कर दो, आज हीटर बंद कर दो। दूर से बंद कर दो बस। बिजली बहता भी है। ह्यूमन बॉडी चैप्टर। आज लेट कहाँ हुआ है दीदी? आज जल्दी हो गया है, लेट नहीं, जल्दी हुआ है, तब कह रही हूँ। नमो बुद्धाय, जय भीम सिस्टर। जय भीम, नमो बुद्धाय। बड़ी दीदी कैसी हो आप? स्वागत है आपका हमारी लाइव में। सभी साथियों को नमो बुद्धाय, जय भीम। आपको भी दीदी जय भीम, नमो बुद्धाय। आप कैसी हो? क्रांतिकारी, जय भीम, जय संविधान। नीला सलाम। आरती दीदी। भारती भाई बोल रहे हैं कैसी हैं? मैं अब ठीक हूँ दीदी, पहले से बहुत बेहतर हूँ। आज मुझे बहुत ही ज्यादा आराम है कि मैं बैठ के आप लोगों के बीच में बात कर रही हूँ। आप कैसी हो आरती दीदी? भारती भाई पूछ रहे हैं आपका खाना पीना हो गया? आरती दीदी, नमो बुद्धाय, जय भीम। लो भाई। दीदी आप कैसी हो? आपका खाना पीना हुआ? मैं ठीक हूँ भाई। दीदी मैं प्रतिदिन आपका इंतजार करता हूँ। आरती दीदी आप कैसे हैं? दीदी पूछ रही हैं भारती भाई आप कैसे हो? ना मुझे किसी का दिल चाहिए, ना ही मुझे किसी का जान, और ना ही मुझे किसी का एहसान चाहिए। मुझे कोई समझ सके, मुझे बस ऐसा इंसान चाहिए, ऐसा इंसान चाहिए। थैंक यू सो मच भाई। हाँ हो गया है आपका? हमारा भी हो गया है दीदी। भारती भाई बता रहे हैं उनका भी हो गया है। ये शायरी आरती दीदी के लिए। मैं ठीक हूँ दीदी। राइट। मेरा भी खाना हो गया आरती दीदी, भारती भाई बोल रहे हैं। जय भीम, जय भीम दीदी, जय भीम। जय भीम, जय संविधान, जय मूल निवासी। और लिखूं आरती दीदी? बिल्कुल भाई लिख सकते हो। जय संविधान, जय संविधान, जय संविधान। थैंक यू सो मच। आज मेरे सभी बहनों ठीक रहती हैं तो मैं और ज्यादा खुश रहता हूँ। बिल्कुल राइट है, बिल्कुल भारती भाई। मैंने देखा है जितने दिन मेरे स्वास्थ्य खराब थे आप लोग बहुत ज्यादा परेशान थे, बहुत ज्यादा। आप सभी भाइयों को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग बहुत किस्मत वाले हैं, जैसे आप जैसे भाई हम लोगों को मिले हो। कॉपी पेस्ट नहीं करना ज्यादा भांजी। हाँ भाई, उसी के हाथ में फोन है, वही कर रही है। थैंक यू भैया, थैंक यू सो मच। मनोज भैया थैंक यू।
जय भीम, नमो बुद्धाय, नीला सलाम, आरती दीदी, पूजा बहन बोल रही हैं, कैसी हो आप आरती दीदी? थैंक यू सिस्टर, थैंक यू। मनोज भैया जय भीम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जीवन लंबा होने के बजाय महान होना चाहिए। बिल्कुल राइट दीदी, बिल्कुल। थैंक यू सो मच। मैं ठीक हूँ सिस्टर। सच्चाई को कभी यारो छोड़ना नहीं, अपने वादों से मुख कभी मोड़ना नहीं। जो भूल गए भीम के एहसान को, ऐसे मक्कारों से रिश्ता भूलकर कभी जोड़ना नहीं। बिल्कुल भाई, बिल्कुल, क्या बात है। आप कैसी हैं? आरती दीदी पूछ रही हैं, पूजा बहन आप कैसी हो? आप खाना पीना हो गया कि नहीं आपका? आरती दीदी खाना हो गया आपका? पूजा बहन दीदी पूछ रही है आपका हुआ? हो गया, मेरा भी हो गया दीदी। वे कहाँ गए, वो कहाँ रहे, ये अधूरी अभी कहानी है। हमने तो सुने हैं भारत की ऐसे कथा कि भारत में संविधान से जानी है, भारत को संविधान से जानी है। बिल्कुल भाई, बिल्कुल। हम हैं भीम के प्रेमी, ना गिनती आशिकों में होती है मेरी। मुझे नशा है जय भीम का, बस यही सादगी है मेरी। क्या बात है भाई, थैंक यू, बहुत अच्छा लिखा आपने। जय भीम, नमो बुद्धाय। सोनू भैया जय भीम, नमो बुद्धाय, स्वागत है आपका। कैसे हो आप? तबीयत कैसी है? तबीयत आज अच्छी है भाई, आज बहुत अच्छा, मैं अपने आप को बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ। बिल्कुल सही हूँ। आप बताओ आप कैसे हो? बात सही है। थैंक यू आरती दीदी, थैंक यू। आप कैसे हैं सोनू भैया? क्रांतिकारी जय भीम, जय संविधान, नीला सलाम सोनू भैया। भारती भाई बोल रहे हैं, दे दो बेटा फोन, दे दो। खाना पीना हुआ कि नहीं? नहीं सोनू भैया, मैंने आज खाना खा लिया, मुझे दवाई जल्दी खानी थी इसलिए मैंने खाना खा लिया है। बिना खाना खा के दवाई खाती हूँ ना तो चक्कर आने लगते हैं। दवाई बहुत हार्ड है इसलिए खाना खा के दवाई खा लिया है। आपका खाना पीना हुआ कुछ? आपका खाना पीना हो गया है सोनू भैया? भारती भाई पूछ रहे हैं। जय भीम भारती भाई, सोनू भैया बोल रहे हैं। ये सब आरती दीदी के स्वागत के लिए शायरी है दीदी। बिल्कुल भैया, बिल्कुल, थैंक यू, होना चाहिए। आरती दीदी हम लोगों से सबसे बड़ी हैं, सम्मान करना चाहिए। नहीं भाई, मैं नहीं देखी हूँ। नहीं। थैंक यू दीदी, थैंक यू आरती दीदी, थैंक यू सो मच। नीला आसमां, नीला समंदर, नीली बाड़ी भीम की, संविधान लिख कर इस बाड़ी ने तकदीर लिखी भारत की सरजमीन की। क्या बात है भाई, बहुत बहुत धन्यवाद भारती भाई। जय भीम, नमो बुद्धाय, नीला सलाम सोनू भैया, पूजा सिस्टर बोल रही हैं। हेलो सोन पापड़ी मामा जी। सुलुलु सुलुलुलु आ गए। कैसे हो सोनू भैया? तुमको नहीं बोल रहे हैं, अरे
कैसे हो सोनू भैया आप? पूजा बहन पूछ रही हैं। जय भीम नमो बुद्धाय। गली गली में नीला झंडा लहरा देंगे, दुश्मनों को कदमों में झुका देंगे, महाशक्तिशाली बनेंगे ऐसे भारत, क्योंकि भारत को भीम राष्ट्र बना देंगे। बिल्कुल भाई, बिल्कुल बनाना ही है। आरती दीदी क्या आप लाइव में नहीं हैं? सुलू लुलू राइट हंस रही है भाई। यदि हैं तो कभी कभी कुछ कमेंट कीजिए। ओके आरती दीदी। जय भीम, जय संविधान। मुझे लगा कि आप चली गई हैं। भैया आप बच्चों को क्यों रुला रहे हो? ठीक है। वो कह रही मामा हमको कह रहे हैं, बहुत शांत करने के बाद समझाने पे तब समझी है। हमारे हौसलों को ताजगी थोड़ी हवा देना, जिए हम सरजमी की खातिर इतनी वफा देना। ये मैं भीम तुम हम पर महज इतनी कृपा करना, मरे हम देश की खातिर बस इतनी दुआ देना। क्या बात है भैया। राम सिंह हाय जी। जो झुका नहीं, थमा नहीं, हर जुल्म से टकरा गया, बाबा साहब नाम है उनका, जो भारत को अलग पहचान बना गया। बिल्कुल भाई, बिल्कुल, क्या बात है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कर रहे हो? बैठी हूँ भैया, और क्या कर रही हूँ? देख नहीं रहे हैं आप? दौलत मिली किसी को तो वो धनवान बन गया, तकदीर मिली किसी को तो वो बलवान बन गया। खुशनसीब हूँ इस जहां में मुझे भीम जी मिल गए और हम एक अच्छा इंसान बन गया। बिल्कुल बिल्कुल राइट भाई। कुछ लिखो पूजा बहन, लिखते रहो कुछ न कुछ। पूजा बहन काम भी कर रही होंगी भाई, इतना फोर्स काहे कर रहे हो? जिस दिन हमारे दिल में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर और दिमाग में उसकी विचारधारा होगी, याद रखना उस दिन अदालत भी हमारी होगी और फैसला भी हमारा होगा। आपने उसको झूठे कर दिए मिनट, उसको जवाब भी देना था भैया। मैंने उसका कमेंट देख लिया था। मैं ऐसे बदतमीजों को छोड़ती नहीं हूँ बिना जवाब दिए, चाहे सारी बहनें ना बोले तो क्या। मैं ऐसे लोगों को ना, ये जो सुनना चाहते हैं मैं इनको वही सुना के भेजती हूँ। ये शायद अपने बहनों की शादी नहीं करेगा, उसी से प्यार करके घर में ही रखेगा, शायद मेरे हिसाब से यही लगता है। इसकी खानदानी असर होगी। इसकी खानदानी असर होगी भाई। इसके घर की बहन बेटी दूसरे के घर नहीं जाती होंगी। राम सिंह अपनी बेटी को बोल देना मैं भी सिंगल हूँ, नहीं तो बहन होगी तो जीजा जी मैं परफेक्ट रहूंगा।
बिल्कुल राइट भाई, बिल्कुल। कई भाई हमारे भी सिंगल पड़े हुए हैं। तुम्हारे पैर में जूते भले ही ना हो, लेकिन हाथ में किताबें जरूर होनी चाहिए, शिक्षा ही जीवन है। बिल्कुल राइट दीदी, बिल्कुल। थैंक यू सो मच। इसीलिए कितने कुत्ते जलते हैं ना, जल जल के फिर चले जाते हैं। धरती पर कैसे कैसे लोग हैं दीदी। लोग नहीं बहन, इन लोगों को जलन होती है, जलन। ये लोग ना मनवादी धारा के होते हैं। मैं कर लूंगा दीदी राम सिंह के बहन से, और उसको लिट्टी चोखा की दुकान पर बैठा दूंगा, क्योंकि बिहार में लिट्टी चोखा फेमस है। बिल्कुल अभी हमें तो नहीं खिला। ऐसे लोगों को ढूंढ भी रहे हैं कि कोई मिल जाए ऐसे, बिना दान दहेज वाले। वैसे हमारे भाई दहेज नहीं लेते हैं, फ्री में शादी कर लेते हैं ऐसे लोगों से। क्या हुआ? फ्री में कैसे शादी होती है? और राम सिंह को भी लेंगे का ही, मेरी बहन और जीजा का अपना दुकान भी है। इसीलिए तो आते हैं भाई सुनने के लिए, उनको सुनना पसंद रहता है ये सब। जो झुका नहीं, थमा नहीं, हर जुल्म से टकरा गया, बाबा साहब नाम है उनका, जो भारत को अलग पहचान बना गया। बिल्कुल बिल्कुल राइट भाई। आरती दीदी कुछ नहीं हुआ। आरती दीदी कुछ नहीं हुआ, बस भारती भाई की शादी के लिए रिश्ता आया था। टूथ पे उसको क्यों बेटा बेकार कर रही हो? रख दो। भारती मामा बिहार से, लिट्टी चोखा हमें तो नहीं खिलाया, जो कि हम बगल के स्टेट से हैं। कह रहा भारती मामा लिट्टी चोखा तो हमको नहीं खिलाए, हम बगल की स्टेट से हैं। अब मैं बोल देता हूँ, शायद मुझे ऐसा किसी के बहन बेटियों को नहीं बोलना चाहिए। बात राइट भाई, नहीं बोलना चाहिए। क्या इनको बोलना चाहिए? आके बोलते हैं। हमने क्या ऐसा बैठ के क्या कोई अपशब्द इनको बोला है? मतलब हम इनकी सुनते रहे? अभी हमारे महापुरुषों ने कम सुना है क्या? इनके कहने का मतलब यही है कि हम इनका सुनते रहे ऐसे। जिंदगी भर गुलामी। इनको शर्म नहीं आती है कि इनको भी जन्म देने वाली एक माँ, वो भी एक औरत ही है। इनको जब नहीं लज्जा शर्म है तो सुने। लेकिन जब बात मेरी बहन पर आता है तो अपना संस्कार भूल जाता हूँ कुछ देर के लिए। ये है संस्कार। नहीं भाई, इन लोगों को सोचना चाहिए ना। आ जाओ भांजा। भारती मामा सुन ली है बात। बात तो सही है। नहीं दीदी, अगर हम लोग नहीं कुछ किसी को बोल रहे हैं, इनके भी समाज की बहन बेटियां बहुत आती हैं, लाइव आती हैं, क्या क्या करती हैं। हमारे समाज के भाई जाके क्या ऐसे गलत कमेंट करते हैं? हमारे समाज के ऐसे भाई बहन हैं जो इज्जत करते हैं सबकी, लेकिन ये लोग हमेशा बदतमीजी भी उतरते हैं। आते हैं ना तो कुछ न कुछ जरूर ऐसे करके बोल के जाते हैं। इनको पता न कौन सी जलन होती है। जो झुका नहीं, थमा नहीं, हर जुल्म से टकरा गया, बाबा साहब नाम है उनका, जो भारत को अलग पहचान बना गया। थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच। मम्मी मम्मी
बोल रहा है। जय भीम, जय संविधान दीदी। थैंक यू सोनू भैया। मम्मा मम्मा मुझे लगता है कि अब जाना पड़ेगा रंग बदल कर। मम्मा आकाश कुछ बोल रहा, आकाश बोल। इसमें से ना बहुत ही बेड़े करती थे इसमें से। तो दोनों की जला, एक बंद कर दो। अरे हमारे ऊपर आ गई थी। हाँ ऊपर वाली बहुत तेज। तो बंद करो, क्यों चालू की? और फिर चाहिए वो ऐसे शॉर्ट हो रहा। हाँ बहुत तेज चमकी थी। हाँ तो बंद कर दो। अच्छा लाइट बंद हो गई थी, जल्दी बंद करनी तो हो गई। एक ही चलाओ बस। इसके बहने लोग लाइव में कथा सुनती हैं और हम लोग को अच्छा नहीं लगता है दीदी। अच्छा नहीं लगता भाई, आप लोग तो गलत बोलने नहीं जाते हो ना। आप लोग तो किसी को गलत बोलते नहीं हो। मम्मी जैकेट मेरे नाम पूछ। फिर मुझे बोला कि मैं पूछ रहा। इन लोगों को पता नहीं कितना मनोबल बढ़ रहा है। दौलत मिली किसी को वो तो धनवान बन गया, ताकत मिली किसी को तो वो बलवान बन गया। खुश नसीब हूँ इस जहां में मुझे भीम जी मिल गए और हम एक अच्छा इंसान बन गया। बिल्कुल राइट भैया, बिल्कुल। दीदी मैं जा रही हूँ। ओके सिस्टर, ओके। बाय बाय बहन, अपना ख्याल रखना। आकाश भांजा जल्दी से आ जाओ, नहीं तो लिट्टी ठंडा हो जाएगा। लिट्टी चोखा है। बना भी दिया। सत्तू पराठा कहाँ मिलता है? बिहार। सत्तू पराठा। मम्मी सत्तू पराठा भी है ना? सत्तू पराठा। सत्तू पराठा क्या होता है? सत्तू का पराठा। हाँ सत्तू पराठा। मुझे तो नहीं पता। अरे भाई आजकल ट्रेंड चला है, सत्तू का पराठा बन रहा है। सभी साथियों को क्रांतिकारी जय भीम। और वो कौन मिलता है? कौन रोक रहा है आपको? पूजा। थैंक यू सोनू भैया, थैंक यू। सोनू भैया पिछड़ गए, साला लोग ढूंढ के चले गए। सभी सम्मानित साथियों को हमारी तरफ से क्रांतिकारी जय भीम, जय संविधान, नीला सलाम। फिर मिलूंगी अगले लाइव में। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। जिस दिन हमारे दिल में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर और दिमाग में उनकी विचारधारा होगी, याद रखना उस दिन अदालत भी हमारी होगी और फैसला भी हमारा होगा। बिल्कुल राइट भैया, बिल्कुल। 1 मिनट आरती दीदी, भारती भाई बोल रहे हैं, अपना ख्याल रखना सभी लोग। ओके दीदी, थैंक यू। आप भी अपना ख्याल रखना दीदी। बाय बाय, गुड नाइट, धम रात्रि। ज्यादा समय नहीं, सिर्फ 1 मिनट। आज मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। क्यों भैया? सोनू भैया क्या प्रॉब्लम है बताओ, क्या दिक्कत है? कुछ क्या सोनू भैया बताना। बताना सोनू भैया, क्या कुछ हुआ है क्या? कोई हस्ती, कोई मस्ती, कोई चाव पे मरता है, कोई नफरत, कोई मोहब्बत, कोई लगाव पे मरता है। ये जमाना है उस दीवानों का जिस जमाने में हर बंदा भीमराव पे मरता। बिल्कुल राइट, क्या बात है भैया, थैंक यू सो मच। ठीक है आरती दीदी, अपना ख्याल रखना आरती दीदी, और लाइव में आया कीजिए कुछ समय के लिए आरती दीदी। बिल्कुल भारती भाई, मैं भी जाऊंगी। मैं जाती थी पहले आरती दीदी के लाइव में। आरती दीदी को मैं बहुत पहले से जानती हूँ, जब से इनका चैनल ग्रो हुआ था तब से जानती हूँ। बीच बीच में मैं लाइव में कई बार गई भी हूँ।
और लाइव में आया कीजिए। अच्छा भाई, नहीं फिर क्यों सोनू भैया ऐसा काहे बोल रहे हो कि अच्छा नहीं लग रहा? फिर क्या हुआ? राइट, बाय 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 दीदी, बाय बाय, थैंक यू। ठीक है, तब मैं जा रही हूँ। ओके आरती दीदी, जय भीम, नमो बुद्धाय, नीला सलाम बहन जी, जय भीम, नमो बुद्धाय। अरविंद भैया स्वागत है आपका, कैसे हो आप? अपना ख्याल रखना आरती दीदी। ओके, बाय 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 बाय। कैसे हो आप? खाना पीना हुआ आपका बहन जी? मैं बिल्कुल ठीक हूँ भैया, आप सबका आशीर्वाद से मैं ठीक हो गई हूँ। आप बताइए आप कैसे हैं? क्रांतिकारी जय भीम, जय संविधान, नीला सलाम अरविंद भैया जी, भारती भाई की तरफ से। आप कैसे हैं अरविंद भैया जी? 12 नंबर लाइक कर दिया है बहन जी। ओके भैया, थैंक यू। आपका खाना पीना हो गया अरविंद भैया? भारती भाई पूछ रहे हैं। लो पाजी, जय भीम, नमो बुद्धाय, नीला सलाम, कैसे हो आप? हम भी ठीक है, खाना खा लिया हूँ बहन जी। ओके भैया, अरविंद भैया थैंक यू। और बताइए घर परिवार में सब लोग कैसे हैं भैया? अरविंद भैया जी, आप झूठ भी बोलते हैं क्या? अभी लाइव तो 11 नंबर हुआ है आपका, लाइव नंबर 12 कैसे हो गया? कभी कभी टाइपिंग में मिस्टेक हो जाता है भाई। हम भी ठीक है, खाना खा लिया हूँ। लो पाजी, आपका खाना पीना हुआ? लो पाजी। अरविंद भैया पूछ रहे हैं घर परिवार में सब लोग ठीक है बहन जी? ओके भैया, ठीक ही रहना चाहिए। हम भी ठीक हैं अरविंद भैया जी, भारती भाई बोल रहे हैं। कल वोट देना है। कल वोट देना है, इसीलिए अच्छा नहीं लग रहा है। वोट कल बम्बई में पड़ रहा है भैया। मैं भी खाना खा लिया हूँ अरविंद भैया जी। मुझे 120 ही दिख रहा है। लो पाजी, नहीं, हाँ, नहीं, हाँ। अच्छा, इलेक्शन वाला वोट पड़ रहा है भैया? सोनू भैया बताना। मुझे भी 12 ही लाइव दिख रहा है भाई। अच्छा बात है अरविंद भैया जी, भारती भाई बोल रहे हैं वोट के वजह से। अच्छा, कंफ्यूज हो रहे हो किसको दें, इसलिए अच्छा नहीं लग रहा है। अभी तो 11 दिख रहा है अरविंद भैया जी। सोनू भाई, जय भीम, नमो बुद्धाय, नीला सलाम, कैसे हो आप? अरविंद भैया पूछ रहे हैं। हीटर चालू करके इस तरीके से बैठ के मस्ती नहीं करते बेटा, पैर अचानक से चला जाएगा। हटा दे, हटा पैर हटा। जय भीम अरविंद भैया जी, सोनू भैया बोल रहे हैं। क्यों आप इतनी झूठ बोल रहे हैं अरविंद भैया जी? कुछ कर सकती है। ऐसा नहीं भारती भाई, लो पाजी अपने डिसलाइक कर दिया इसलिए। बच्ची कुछ नहीं कर पाई। वोट के वजह से नहीं, फिर क्या हुआ सोनू भैया बताना कुछ। मैसेज कर दो, क्या प्रॉब्लम है बताओ, लेकिन बताओ, नहीं तो मैं भी आपसे कभी नहीं कुछ बताऊंगी।
नहीं अरविंद भैया जी, जो अभी लाइक वापस किया होगा उसको प्लास्टिक इधर आ जा। पक्का प्लास्टिक का कीड़ा पड़ेगा जो भी लाइक वापस किए होंगे। ऐसा ना बोलो भारती भाई। कंचन लता बहन जी, डॉक्टर संदीप पथरी वाले जो डॉक्टर आजमगढ़ के हैं ना, सोनू भाई के नंबर व्हाट्सएप पर कर दिया है। सोनू भाई आपको सेंड कर देंगे। ओके अरविंद भैया, ओके, बहुत बहुत धन्यवाद। लड़ाई क्यों हो रही है मेरे समझ में नहीं आ थैंक यू भैया, अरविंद भैया, थैंक यू सो मच। एक बोतल एक गिलास, एक पानी वाली बोतल बस। किचन की लाइट बंद कर देना। भारती मामा गए? भारती मामा नहीं है। अभी तो कमेंट भी नहीं किया। सही में लो पाजी। अगर पानी 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 प्लास्टिक का कीड़ा शब्द एक मजाक के भाषा में प्रयोग करने वाला शब्द है जिसको उपयोग ज्यादातर लोग मजाक करते हैं। तब क्या सोनू भाई हाजिर हो? पता नहीं सोनू भैया कहाँ चले गए। ये दवाई वाली जरा पन्नी दे देना मुझे, 3 दवाई रह गई है खाने की। गिलास बेटा, बोतल से नहीं खा पाऊंगी। गिलास लाए हो ना? हाँ लाया है। अभी रुक जाओ, मैं बोतल ले रहा हूँ। मैं प्लास्टिक का कीड़ा को पूरा परिभाषा बता दिया हूँ दीदी। अब मुझे ये नहीं बोलना दीदी कि क्या होता है प्लास्टिक। ओके भाई, नहीं बोलूंगी। आकाश बोतल आपकी खाली हो गई। बोलते नहीं होता। मम्मा इसको तो छूना भी ठीक है।
जी पर दिखा मार दूंगा। मैं उसको नीचे रखना, गिर जाएगा, पैर लगेगा तो। गिलास के दिखा, मैं तो एकदम कवर। सोनू भाई पिज्जा हीटर यहाँ मेरे सर पे कहाँ रखोगे क्या? सोनू भाई पिज्जा बना रहे होंगे फटाफट। पता नहीं क्यों डिस्टर्ब है भैया, बताए भी नहीं, बोले अच्छा नहीं लग रहा, चले गए। सो जाओ, खाना खा लिया ना सब। भाई मेरा फोन गिरने वाला था। क्यों सिस्टर? मैं जा रही हूँ सोने। ओके बहन, सो जाओ आप। आप लोग अपना ख्याल रखना। ओके बहन, आप भी अपना ख्याल रखना। बाय बाय, गुड नाइट। वहां पे रख दो, उसके ऊपर। हाँ बस। मम्मी मुझे भी ये दे। बाय बाय सिस्टर, बाय बाय। कल 15 जनवरी बहन कुमारी मायावती के जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी भाई बहनों को। जय बीएसपी, जय भीम। बिल्कुल भैया, बिल्कुल आपको भी। थैंक यू भैया। ये हाउस में कैसे हो इसका? लगता है कुछ पर हेल्प। हाँ, क्यों सोनू भैया बताए नहीं, कहाँ चले गए थे? क्या प्रॉब्लम है बताओ। सोया हूँ। अच्छा, रूम पे हो? किसी की तबीयत खराब है कि आपकी खराब है? सोए हो, सो जाओ, क्या दिक्कत है बताओ। नहीं,
क्या हुआ सोनू भाई, कैसे नाराज हो मेरे छोटे भाई? पता नहीं अरविंद भैया, जब से मेरी तबीयत खराब हुई तब से मैं किसी के लाइव में नहीं जा पाए, इसलिए कुछ पता नहीं है। तारिक सेट कर देना, वो जलेगा फिर पिघल जाएगा बेटा। कहाँ रखूं तार? हाँ? तो उसको मत लगाओ वहां, पहली बात वहां मत लगाओ। सोनू भाई, आपकी ड्यूटी कितने बजे से कितने तक चल रही है आजकल? आकाश, उल्टा काम बिल्कुल नहीं करते बेटा। उल्टा काम करे कौन सा? जय भीम भैया, अरविंद भैया, जय भीम। हमारा एक बेटा है, कोई चीज लेके आओ सबसे पहले उसको खोलेगा, खोल के फिर उसको अलग करेगा, फिर उसको सेट करेगा। सेटिंग मशीन। हाँ, जब सेट ना हो पाए ना तो उसको लेके उलझा रहेगा, दूसरों को भी उलझाएगा। सेटिंग मशीन। सेटिंग मास्टर है। 11 बज गए, मेरे को नींद नहीं आ रही। जिद करके रिमोट वाली कार लेके आया, और एक ही दिन में खराब। जिस दिन लाया उसी दिन जिस दिन लेके आया उस दिन खोल के अलग कर दिया सारा पार्ट, फिर उसको जोड़ने लग गया, वो खराबी हो गया बना नहीं। भी नहीं ध्यान रखी है। कोई नहीं